Welcome to Nashama News. I am Faizan Rizwan. Today, James School, RT Nagar held a science exhibition called Science Spectrum 2024. The students of James School displayed their innovations in the field of science and technology. Today, the Nashama News went and interviewed a few students to talk about their various projects. These are the students who are going to be the future of India. And we spoke to the few faculty over there. In spite of this, they even held a small food fest which was in the campus itself. This is Faizan Rizwan from Nashama News. Say I'm Tasha. एक मिनट. We are representing Russia. Russia, the largest country in the world. It has been made and historical. अस्सलाम वालेकुम। ये जेम्स स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है साइंस फेस्ट करके रखे हैं हम लोग, साइंस स्पेक्ट्रम। ये हम लोग 1 in 3 years वैसा बनाते हैं, हम लोग करते हैं ये। इसमें क्या है कि हम लोग वी गिव लॉट ऑफ माइंड डेवलप करने के लिए हम लोग उनको सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी दूसरे चीज़ों पे जो प्रैक्टिकली होता है, जो एक्चुअली लाइफ में हमारे होते हैं ना, वो वाले प्रोजेक्ट्स हम लोग लाइव डेमो प्रोजेक्ट्स बना के सब हम कर रहे हैं, क्या ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि एक्चुअली जो वो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से डेली लाइफ में यूज़ होता है। सी अभी क्या है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ग्लोबलाइज हो गया है पूरा, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह उस तरह के प्रोग्राम्स आगे आने लगे हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स जो रनिंग मॉडल्स रहते हैं वो बनाए हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग्स करते हैं वो किए हैं, और सोशल जो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कल्चर्स रहते हैं उन लोगों को हम लोग उनको ये लिबास पहना के, अलग अलग कंट्रीज़ के उनके कुजीन्स क्या क्या रहते हैं खाने पीने के वगैरह, वो सब बना के हम लोग यहाँ इस तरह का इंकरेजमेंट बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग किया है।
इससे जो है एक तो बच्चों की टैलेंट है वो सामने आता है। जी जी और बिल्कुल। एग्ज़ाम और पढ़ाई में उनकी किस तरह मदद होती है, कैसे एग्ज़ाम्स मार्क्स वगैरह बढ़ सकते हैं? हाँ, नॉर्मली क्या है कि अभी नॉर्मली जो चलता है कि स्कूल में टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स के जो आंसर्स पढ़ते हैं वही एग्ज़ाम्स में लिखते हैं। बट इसमें क्या होता है कि ये लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और दे राइट इट इन देयर ओन वर्ड्स। उनको समझ में आता है क्या क्वेश्चन है और उसको किस तरह से आंसर करना है। दे विल बी बेटर ऑफ। उनको एक तरह का एक्स्ट्रा ये मिलता है, उनको बूस्ट मिलता है कि जो उन किताबों जो लोग वो किताब में पढ़े हैं वो जो बच्चे वही प्रैक्टिकली कैसे होता है, तो उसमें उनको अंडरस्टैंडिंग ईजी होती है। और जिस तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चंस आए, कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आंसर करने के लिए उनके पास एकदम ईजी ये रहता है उनको। जेम स्कूल की क्या तारीख है, कब ये कायम हुआ, ये क्या इसका मकसद रहा जी, और किसने इसे कायम किया? जेम स्कूल ये आटी नगर में मुक़िम है ये। एंड इसके जो फाउंडर्स हैं मेरे डैडी हैं, मेरे अब्बा हुज़ूर हैं, उनका नाम डॉक्टर CYS खान है और मेरी मम्मी, उन दोनों ने खोला था। अभी तो उनका इंतकाल हो गया है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो किया था उसको बाखूबी से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं चाहिए कि और ऐसे ही हम लोग तरक्की करते रहें। स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स रहे हैं? हमारे स्टूडेंट्स अराउंड 650 स्टूडेंट्स हैं। LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़ल्ट्स एवरी टाइम 100% ही आते हैं 10th स्टैंडर्ड में। PU कॉलेज भी आप शुरू किए? हाँ, PU कॉलेज भी हम लोग ने शुरू किया है हाल ही 3-4 ईयर से। तो ओपन यूनिवर्सिटी है। जो बच्चे जिनको कॉलेज में नहीं जा सकते, उनको दे हैव नॉट गॉट द मौका नहीं मिला है उनको जाने के लिए, तो वैसे बच्चों को हम लोग यहाँ पे पढ़ा के उनको उनके एजुकेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। फीस वाइज कैसा है यहाँ पे? फ़ीस नॉर्मल एकदम जो मार्केट में जो एरिया में है उस तरह के हम लोग एग्जॉर्बिडेंट फ़ीस भी नहीं रखे हैं। हम लोग जो गरीब तबके पे आते हैं वो भी है यहाँ पे, उन लोगों को हम लोग डिस्काउंट देके भी हम लोग पढ़ाते हैं। और नॉर्मल जो मार्केट में जो फ़ीस है एरिया में वही हम लोग रखे हैं। थैंक यू। जी मेरा नाम सैफुल्लाह खान है और मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ और यहाँ की पूरी देखभाल रहबरी मैं देख रहा हूँ। From the day one when we got to know this year we have Science Fest event. और फर्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्या है तो यू कैन सी द AI, द वर्ल्ड इज़ AI now. So we started with robotics and then the floor wise we have our Fairyland Wonderland, Disney World or Barbie house, all that we made in one corner so that छोटे जो बच्चे हैं they only want fun learning, तो उनके लिए फन लर्निंग टाइप में हमने प्रोजेक्ट्स दिए हैं. देन कमिंग टू द सेकेंड फ्लोर वी जस्ट फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड टूर. तो वर्ल्ड टूर जो छोटे बच्चे हैं दे गॉट ड्रेस्ड अप देमसेल्फ विथ डिफरेंट कंट्रीज एंड दे प्रोजेक्टेड देमसेल्फ गुड alhamdulillah. And then coming to the next floor we also exhibited the art and craft, which is a compulsory subject in the school. And then we moved on to the third floor. We have science or the science exhibition like physics, chemistry and bio, including the space room. That is the extraordinary project which we planned. Or alhamdulillah, it was very nice. Children were working with us till night 10:30, 11 yesterday. तो ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं. दे नो दैट if the children are there with me, they are very safe, and they were working with teachers and we all completed the project and we moved on. Your good name and designation? Yeah, my name is Rubina and I am the principal of the GEM school.
grandma of Muhammad Imad and Aira Huda. I'm really proud my grandchildren are studying in this school. And the main incident had happened to Aira. The school took a very good action, very speed action, and the teachers, the principal, mashallah, alhamdulillah, they took a very good action, very fast action. And she's blessed that she's okay now, she's fine now, and happy that children, they've encouraged the children too much. And I'm proud that my children have this thing. What do you say? What do you say, Amrin? They improved a lot. And I'm blessed that, so just call him Amrin. The way he takes the Urdu classes, everything, mashallah, Imad has improved a lot. The way he says the Urdu, everything. I'm really happy they've come to the GEM school. इंग्लिश के साथ उर्दू, Everything, कन्नड़, हिंदी, सब everything, ज़बानें sports, सिखाई जा रही हैं। yeah, everything, sports, everything, and they encourage the children, the whole children. 3 cheers for the teachers, 3 cheers for the school. I'm happy they come to the GEM school. Thank you. Thank you. Device, it is a very important parts of computer. It is a keys are many on the keyboard. It's a very, very beautiful experience. One has to come and watch this. And my kids have been studying from UKG, and the improvement they're having, thanks to school, they have the encouragement the teachers have given them, push they have given them. It's really nice. I have my 2 kids here. One is in 4th and one in 2nd standard. And so beautifully they've been explaining, not only my child, all the kids out here, from robotic till world tour, everything till all the classes have done very beautifully. Yeah. Symphonist. Launched on July 14, 2023, and from ISD from Satish Dhawan Space Center and in Sriharikota, India. Chandrayaan 3 is a third lunar exploration mission that is the planned and aimed a successful landing on the moon. And it contains a lander Vikram and a rover Pragyan. It does not contain any data relay from Chandrayaan 2. There are some highlights of Chandrayaan 3. It's like successful landing and of mission objectives. The Chandrayaan 3 made the India the first country to launch on the south pole of the moon. And the launch of Chandrayaan 3 made both the India and the other space scientific community proud. Good morning. I'm a parent of my child who's studying in the same school, GEM school, in LKG. I'm like overwhelmed, thrilled to see everything. Like the children, they've given so many good efforts. It's like the teachers have implemented everything so beautifully. I've just fell in love with everything. It's just wow. How was your exhibition experience? And how many students participated in this exhibition? Like literally every other student has participated, and you know the way they're speaking up, the confidence level in all the children, like from LKG grade 1, it's just wow. They've been telling it so confidently. Even the UKG and LKG students, it's just really wow to see. I'm just very happy, and
I don't know. I have no words to express my feelings today. I'm just so happy about it. What your baby did the project here? It's in LKG. My kid is in LKG and she's done types of houses. You can go have a check. Okay, good. What are you dressed today? What you have? What costume is this? Good morning, my name is Manoj from Bhubaneswar. I am going to give you information about astronaut. An astronaut is a highly trained professional who travels in space. An astronaut is a highly trained professional who travels in space to perform various tasks. Astronauts make sure that spacecraft functions properly. They play a very important role in advancing science and technology. बताइए मैडम कि किस तरह यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी है इस स्कूल में और किस तरह बच्चों को तरबियत दी जा रही है? नहीं, तरबियत जिम्मेदारी तो मुझे लग रहा है हम ले ही नहीं रहे, पूरा टीचर्स ही ले रहे जिम्मेदारी। हम तो सिर्फ आके बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, पूरा जिम्मेदारी टीचर्स ही ले रहे हैं, पुश भी वही कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट नहीं रहता ना बच्चों में, जो टीचर्स भी डालते हैं यहाँ पर। इट्स नॉट ओनली खाली टीचर्स, आई एम श्योर प्रिंसिपल सब जानते हैं एक एक स्टूडेंट्स का कौन सा क्या क्या बिहेवियर है यहाँ पर। तो यहाँ दैट इज़ द बेस्ट थिंग यहाँ पर। तो जहाँ जो इनक्रेजमेंट मिलता है, हम पेरेंट्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना लेना ही नहीं पड़ता यहाँ पर, तो इट्स द बेस्ट थिंग यहाँ पर। तो आपके बच्चे ने क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर पेश किया? हमारा वर्ल्ड टूर में है मेरी एक बेटी का और मेरा बेटा का मैथमेटिक्स का है, तो यहाँ पर वही दो प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ पर। ये कैसा है? वो बहुत अच्छा है। उर्दू जो हम लोग बोलते हैं ज़ुबानी, मगर हमको लिखना उतना आता नहीं होता है, बट यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया और क्या बोलते हैं ईजी हो जाता है उनको। घर पे भी उनका कुरान का भी उर्दू वहाँ पर भी पढ़ना, हज़रत के पास भी, क्योंकि यहाँ पर पढ़ के आ जाते हैं वो लोग। और सिर्फ उर्दू कुरान ये नहीं, सूर्य भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, इखलाक भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, सब हदीस भी यहाँ पर बताते हैं सब। तो बहुत अच्छा लगता है। तजवीद इज़ वेरी गुड। हाँ, तजवीद भी बहुत, तजवीद आजकल तो बहुत कंपलसरी है, तो तजवीद में जो सिखाते हैं बहुत अच्छा है जी। Your name? Mohammad Amin. Mohammad Malik Rehan. Namaste. ये वृक्ष प्रेमी तिमक्का के बारे में है। कर्नाटक राज्य में रहने वाली ये महिला बहुत ही महान और बहादुर है। इन्होंने 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। ये सब कार्य उनको अपने पति से तौर पे मिला है। अगर उन्होंने ये निश्चय किया कि समाज सेवा के लिए, समाज के लिए कुछ तो करेंगे, आज इन्होंने ये चीज़ करके दिखाया। अगर आप भी एक पेड़ लगाए तो क्या पता आपकी दुनिया बचाए। धन्यवाद।
ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಇದು ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಸಮಿತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು. ಇದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ವರ್ಣದೇವ ರಚಿಸಿದ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ವೇಷ ಎಂದರೆ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಷ, ಭಾಷೆ, ಕುಣಿತು, ತಾಳ. ಇದು ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes. Yeah. We are from Gem School and I am from 10th standard. We are here to mystery box. Try your luck. What is that luck? 20 rupees. This is What for your luck? What type of luck? Like you take the numbers. You hear very much we gift. are gifts. We'll give you that gift. Like 120 rupees gift, 5 rupees gift, like 150 rupees gift, 200 rupees gift. Small gift is there. For your luck is there, so you want. So what is the fees? Fees Only 20 rupees. Good. शुरू से बोलो. Good morning. Myself Muhammad Usman, pilot. Welcome abroad. We will take you to attend to world tour. Thank you for flying with us today. Good afternoon. My name is Muhammad Ali Sheikh. This is a Hyperloop train model. It is a new mode of transport that would make travel to areas, places and countries in a much faster method. A Hyperloop train is designed in a way that it doesn't require any type of wheels or any type of fuel to move on. It only requires only a certain amount of force or pressure to move forward. It is a new type of train that it can reach up to speeds of 1100 kilometers per hour, making travel from places such as World Trade Center, Bengaluru to Burj Khalifa, Al Dubai. It actually has many new world applications as well. In India, IIT Madras has started a new project that from Mumbai to Pune that would only require 25 minutes of journey, making aeroplanes fall behind in its race. Now here I have made it in a much simpler method. And the train would move. Real world application. It has a pot-like shape that has a vacuum base forward. Here I have made a simpler model here. And this. Thank you. Good. Yeah, what is this about? The refraction phenomenon. Tell me. Good morning, myself Rashmiti, a student of grade 9 Gem School, and my topic is refraction. This is a natural phenomenon I am going to explain you through an experiment. Firstly, refraction is a simple and common phenomenon that occurs when light passes from one medium to another, causing it to bend or change its direction. This bending happens because the speed of the light changes in different directions. I have taken water, filled it in glass, I have added salt, I have added a straw, it appears to be bent or broken in the water state. This is because the density will be increased when we add a straw into the water, it appears to be bent. So, the water gets density in air, the density can take like a glass slab, I will present CRP is here, desktop corner. the when we add it, it causes dispersion. Dispersion is nothing but spreading white light. This is oil and water. Can you see the bonds between this? When we reflect this oil and water both have different refractive dimensions. In water, the light will not appear and carry salt in oil. This is salt water. In the bottom there is salt. When we put here, lightly it will reflect all like this. Before adding salt in water, the density will be less. After adding salt inside the water, the density will be more and break. Thank you so much for your project. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೇರ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು 4 ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ದಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅಮೇಝಿಂಗು. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು 10th ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಸಹ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ 2 ಪದ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಸಿಂದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೂಮ್ ವೈಸು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ CRP. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. My topic is plastic recycling. This is a plastic polluted river where people have polluted it. So government have introduced the plastic recycling factory, where the first step is garbage bin. Then the second step is the garbage bins are taken over to the recycling factory. The third step is the plastic gets separated from the PET and HDPE plastics. And the fourth step is it is cutted toward the maximum size of this plastic. This is a fourth step where the plastic is moved into and gets chopped into a smaller pieces. This is a fifth step where the plastic gets melted and turns into a reusable and biodegradable materials which does not harm animals. Good. Thank you. Pratana, Air Hostel, welcome abroad. Welcome to our Airlines. Let me help you with that. Thank you for flying with us today. Yeah, what is this about? The refraction phenomenon. Tell me. Good morning, myself Ashwini, a student of grade 9 General School, and my topic is refraction. This is a natural phenomena I'm going to explain you through an experiment. Firstly, refraction is a simple and common phenomenon that occurs when light passes from one medium to another, causing it to bend or change its direction. This bending happens because Anna Fatima, and she is Sada Taskia from grade 9. Today we are presenting our project Drowsy Detection System. The goal of this project is to prevent accident caused by drowsiness. When a driver gets sleepy, they may close their eyes for a very long time, which can be dangerous. Our system detects and alerts and stops the car. Here now my friend Taskia will continue explanation. Here's how our system works. The IR sensor detects when the driver's eyes are closed. If the driver closes their eyes for too long time, then the sensor detects and sends this information to Arduino Uno. Then the Arduino Uno processes the signal. If the eye stays closed for too long time, then the system thinks the driver is drowsy. The buzzer then sounds an alarm to wake up the driver and keep them alert. Thank you for your time. And I'm Tarun. We are here excited to show what we have, the Java project. An ATM machine simulation. SF Academy has been benefited us a lot, providing not just academic support but also extracurricular opportunities. We have learned a lot here, but we can't wait to show what we have accomplished here. The ATM machine simulation. It consists of deposit, withdraw, and balance inquiries. I have used the Java programming. Java is also known as OOPS language, which stands for Object-Oriented Programming Language. Here, I have used the Java util.scanner package and I have given the name as ATM machine. I have already initialized the balance as $1,000 and the PIN as 1234. Now to check if the entered PIN by the user is correct, we are using constructor authenticate and the comparison operator
When the pin is equal to the entered pin by the user, then the program will proceed to the next menu, where we check the balance. After we providing the menu, it prints the following statement. Next, we check the deposit money. Here we have used the if else statement condition. If the amount is greater than 0, then balance added by the input will be equal to the amount in the system. And else, if the amount is not equal to 0, then it prints invalid deposit money. Now method to withdraw the money. Here we have used the if else ladder and logical and method. If the amount is greater than 0, it minuses the amount entered by the user and the amount in the system. Else it shows insufficient balance or invalid withdrawal money. Now the main method. Here we have used the scanner class, where we are declaring an object ATM for our ATM machine program. Step 1, to authenticate the pin. If the pin entered by the user is correct, it proceeds to the next. Here we are using the switch case and while loop, do while loop method. After executing the program with these cases, the program will run without any errors. Now let's run the program. As you can see here, here it is showing incorrect pin. Now first we will try to put the incorrect pin. It is showing incorrect pin, access denied. Now again we will try to run the program again. This time we will put the correct pin. It is showing the 4 ATM menus: check balance, deposit money, withdraw money, exit. So first we will check the balance. The balance is $1,000. So second we will deposit some money. We will deposit $5,000. Now again we will check the balance. The balance is, the current balance is $6,000. Now third we will try to withdraw some money. It is showing insufficient balance because we don't have more money than $6,000. Now again we will try to deposit some $1,000. It is showing $1,000 withdraw successfully. Now we will check the balance again. The balance is $5,000. So next we will come on to the fourth. It is showing thank you for using our ATM project. Thank you.